I am already invested in one of the banks, and that bank has not come out with result yet. But again, I track the banking industry because I am already invested in the banking industry. So people have to first understand the premise how banking industry should be analyzed, and then they should start looking at the results. क्योंकि अक्सर लोगों को ये होता है कि यार वाई ओ वाई रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है, तो स्टॉक क्यों डाउन जा रहा है या ऐसा क्यों हो गया। तो पॉइंट इज, आप अगर किसी भी बैंक में वाई ओ वाई देखेंगे तो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर ना एक साल में बहुत चेंजेस हो जाते हैं, सी चेंजेस हो जाते हैं। अगर आप पिछले 5 क्वार्टर की बात करें, पिछले 4 क्वार्टर की बात करें, पिछला जून का जो क्वार्टर था, इट वाज द मैक्सिमम कोविड वेव इम्पैक्ट, सेकेंड वेव वाज द मैक्सिमम इम्पैक्ट फॉर इंडिया, और जून के क्वार्टर वाज रिफ्लेक्टिंग दैट, नंबर वन। नंबर टू, interest rate environment in June last year was very very different than what we have today. So comparing today's June quarter with last year June quarter does not makes any sense to me actually. Yes, most of the street जितने भी एनालिस्ट लोग हैं, जितने भी टीवी हैं, सब लोग ज़्यादातर वाई ओ वाई प्रेजेंट करते हैं और वाई ओ वाई पे ग्रोथ दिखाते हैं। बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती हैं, 50% ग्रो हो गया, 35%, 30%, 20% ग्रो हो गया। बट द बेटर वे टू लुक एट इज, बैंकिंग इंडस्ट्री इज ऑलवेज एन एक्रेटिव बिजनेस। मतलब हर क्वार्टर आपके लोन ऐड हो रहे हैं, तो जितनी इनकम आपकी पिछले क्वार्टर बननी है वो इस क्वार्टर तो आएगी आएगी, एडिशनल इनकम कितनी आएगी इस क्वार्टर में वो देखना बड़ा जरूरी होता है। तो इसलिए बैंकिंग इंडस्ट्री में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना बहुत जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू, लैंडस्केप ऑफ द इंडस्ट्री चेंजेस एवरी क्वार्टर और एवरी 2 क्वार्टर्स। तो वो भी इसलिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक साल पुराना आप नंबर देख के आप अपना व्यू बनाएंगे बैंकिंग इंडस्ट्री पे तो वो सही नहीं बनता। सो हाँ, मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। बट अगर आपको थोड़ी टेलविंड समझ आनी है या हेडविंड समझनी है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना बहुत ज़रूरी होता है। सो फार हम लोगों के पास ऑलरेडी 3 बिग बैंक्स के नंबर्स आ चुके हैं, जो 3 हेवी वेट्स ऑफ बैंक निफ्टी, विच इज़ ICICI, कोटक एंड HDFC. So I've gone through almost all of them. HDFC has reported good deposit growth of 2.5-3%. लोन बुक भी उनकी 2% के आसपास ग्रो हुई है। एज कम्पेयर टू पास्ट 3 क्वार्टर्स बहुत स्लो ग्रोथ है, बट ओके इस टाइप, मतलब ऐसा नहीं है कि लैगर्ड है। अब आप इतना बड़ा हाथी बन जाते हैं तो आप स्लो भी चलेंगे थोड़ा सा, आप खरगोश की तरह भाग नहीं सकते। और बट आईसीआईसीआई, जितने भी बड़े बैंक्स हैं, मैंने एक दो फॉर्म्स में पहले भी बोला था कि इस क्वार्टर हमारे ट्रेजरी लॉसेस M2Ms आएंगे, क्योंकि हर एक बैंक को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी पड़ती हैं टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आरबीआई। तो सभी बैंक्स के M2M आने थे, लॉसेस आने थे, इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। दैट्स अगेन, मैं वही बात कर रहा हूँ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। पिछले एक क्वार्टर में हमारे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए हैं बाय 1.5%। सो आपके ट्रेजरी बुक पे जहां पर बॉन्ड पोर्टफोलियो और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं उस पर 1.5 to 1% का हिट आना ही आना है। तो जो लोग ये चीज ट्रैक कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उन्हें नजर आती है ये चीज और वो ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आप ईयर बिफोर से आप ट्रैक करेंगे तो आपको शॉक सा लग जाएगा कि ये क्या हो गया। तो इसीलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना बहुत जरूरी है। और एज एक्सपेक्टेड, बोथ HDFC एंड कोटक महिंद्रा बैंक हैव रिपोर्टेड डिप इन अदर इनकम, क्योंकि उनके M2M लॉसेज आए हैं। HDFC के 1300 करोड़ का M2M लॉस है, कोटक महिंद्रा का समवेयर अराउंड 600 करोड़ के आसपास M2M लॉस है, 850 करोड़ के आसपास M2M का लॉस है, ड्यू टू विच देयर टोटल इनकम इज नॉट ग्रोइंग दैट फास्ट। मतलब डिपॉजिट ग्रो हो गए, आपके लोन बुक ग्रो हो गई, बट आपकी टोटल इनकम नहीं ग्रो हुई। क्यों? क्योंकि आपकी अदर इनकम पे आपको हिट लग गया, जबकि आपकी इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो फ्लैट लगता है या नेगेटिव, बट वो M2M का इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ ट्रेजरी लॉसेस। द बिगर थिंग टू लुक एट इज, क्या आपकी प्रोविजनिंग बढ़ रही है, क्या आपने ज्यादा प्रोविजनिंग करी है, वो सब देखना ज्यादा जरूरी है। अब HDFC फॉर एग्जाम्पल हैज रिड्यूस्ड इट्स प्रोविजनिंग विच इज इन लाइन विद द इंडस्ट्री, क्योंकि
पिछले 2 साल में काफी मोटी प्रोविजनिंग बनी है बैंकिंग इंडस्ट्री में ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, और धीरे धीरे अब चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी ऑब्वियस कि प्रोविजंस नीचे आनी ही है। कोटक की बात करूं तो कोटक ने पिछले 2 क्वार्टर में, यानी नॉट दिस क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर में प्रोविजन का राइट बैक लिया था, विच लेड टू ए हायर प्रॉफिटेबिलिटी। और दैट मीन्स कि उन्होंने कोविड के पीरियड में इतनी प्रोविजनिंग बना ली थी कि जब उनके पैसे वापस आने लगे तो उनको प्रोविजन राइट बैक करना पड़ा। तो देयर इंक्रीमेंटल प्रोविजन, यानी कि उस क्वार्टर की जो प्रोविजन थी जो उन्होंने बनाई, उससे भी ज्यादा उनके पास पैसे वापस आए फ्रॉम द प्रीवियस प्रोविजनिंग, जिस वजह से उनका राइट बैक आया इन द प्रोविजनिंग नंबर। तो प्रॉफिट तो था ही था, थोड़ा बहुत जो इंक्रीज हुआ, बट प्रोविजनिंग राइट बैक भी हुआ, तो उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा जंप करी है कोटक की पिछले 2 क्वार्टर में। इस क्वार्टर में थोड़ी सी कहानी अलग है, क्योंकि इस क्वार्टर में कोटक ने 850 करोड़ का हिट लिया है ट्रेजरी एमटीएम पे, जिस वजह से उनका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% से डाउन है। अगर आप एनालिस्ट रिपोर्ट देखेंगे, दे ऑल आर रिपोर्टिंग वाई नंबर्स, इट डज नॉट गोज वेल विद क्यूओक्यू। तो क्यूओक्यू की कहानी अलग है इन सब में। तो पॉइंट इज उनकी प्रोविजनिंग अब थोड़ी थोड़ी नॉर्मल आ रही है, पहले 2 क्वार्टर में राइट बैक आया था, अभी उनकी धीरे धीरे प्रोविजनिंग नॉर्मलाइज होने लगी है, राइट बैक्स कम आ रहे हैं, एंड दे आर ऑन वे बैक टू द नॉर्मलाइजेशन कर्व ऑफ प्रोविजनिंग. In terms of results, quarter on quarter, Kotak Bank has reported, I think, 25% lower number in profit. HDFC has reported quarter on quarter, I think 7% down, and ICICI has reported somewhere around flattish profitability. बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, 1% डाउन है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आईसीआईसीआई ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्म कर दिया है, क्योंकि आईसीआईसीआई का जो डिक्लाइन इन अदर इनकम था, विच इज M2M लॉसेस, वो इतना ज्यादा नहीं आया एज कंपेयर टू कोटक और एचडीएफसी के। क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई ने अपनी अदर इनकम में थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई है, विच हैज नेगेटेड द लॉसेस फॉर M2Ms, तो विच हैज लेड टू नॉर्मल रिजल्ट, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन नहीं है। कोटक और एचडीएफसी हैज क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन, बट इट वाज एक्सपेक्टेड इन द लाइंस, इसलिए शेयर प्राइस की मूवमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। सबको पता था कि ट्रेजरी लॉस आने हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अगले 2 क्वार्टर में भी फर्दर ट्रेजरी लॉसेज आएंगे जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ाएगा। तो ये तो मतलब प्री डिसाइडेड है कि फेड इज गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट टिल 3.4 3.5%, और जैसे जैसे फेड बढ़ाएगा आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा ही। वो थोड़ा सा गिवन सा लेकर चल रहे हैं सब लोग, बट अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता है तो इट पोजेस सम अदर चैलेंजेस ऑल्सो। बट अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता है तो हो सकता है हमारे M2M लॉसेज ना आए, और बट अगर आरटीआई बढ़ाता है तो हमारे M2M लॉसेस तो आएंगे ही, इट इज ए गिवन। और जैसे जैसे सब बैंक्स जो हैं धीरे धीरे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करने के लिए अदर इनकम में और फी इनकम और या सब चीज़ों को ऐड करके या इंक्रीज करके करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारा इफेक्ट वेन ऑफ हो जाएगा। बट आफ्टर लुकिंग आफ्टर 2-3 क्वार्टर्स, मतलब 2 क्वार्टर के बाद अगर देखें, यानी मार्च का अगर रिजल्ट देखेंगे, तो उसमें हमारे M2Ms आने की उम्मीद बहुत कम है, एंड मार्च क्वार्टर विल प्रोबेबली बी वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर फॉर बैंक्स। बट हाँ, अगर ग्रोथ देखें डिपॉजिट में, आई एम वेरी सरप्राइज्ड विद आईसीआईसीआई, दे हैव लॉस्ट अराउंड 14,000 करोड़ का डिपॉजिट इन दिस क्वार्टर, विच वॉज ए सरप्राइज टू मी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि आईसीआईसीआई की पिछले 2 साल की स्टोरी ऐसी बिल्ड हुई है that ICICI is becoming more digital, and they are moving from a traditional banking to a digital channel banking. So any digital bank should be able to garner, यानी कि उनको और ज्यादा डिपॉजिट मिलने चाहिए। I was surprised कि in whole of the industry only ICI is the only bank which has declined in the deposit pattern. However, बाकी सब पैरामीटर्स आईसीआईसीआई के ठीक हैं, उनका एनआईएम सब सही चल रहा है, फिर कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी अगर M2M को हटा दे तो दे आर इन लाइन।
My only thing was कि उनके deposit क्यों कम हुए हैं, which again I would have to go through their corporate presentation and their con call, which was scheduled at 5 p.m. I didn't attend it, so I am waiting for some notes. So एक बार वो पता लग जाएगा तो then we are able to know कि भाई क्या चल रहा है. So that's a brief summary on all the three banks. However, I feel the expectation of growth from bigger banks should be toned down. आप अपनी expectation भी थोड़ी tone down कीजिए. एक 17 लाख करोड़ की book of HDFC cannot grow by 20% every year. वो लोगों को भी समझने की जरूरत है. However, a smaller bank which has a 1 लाख करोड़ की book हैज ए हायर प्रोपेंसिटी, उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ग्रो करने की 20-25% से, और एक 17 लाख करोड़ की बुक को 20-25% से ग्रो करना बहुत मेहनत का काम होता है. तो ये चीज लोगों को भी समझने की जरूरत है. इस वजह से थोड़ा सा जो बड़े बैंक्स हैं वो प्राइस मूवमेंट में भी थोड़ा सा डिलेड चल रहे हैं. आप देखेंगे छोटे बैंक बहुत जल्दी तेजी से भागते हैं और बड़े बैंक जो है इतनी जल्दी नहीं भागते हैं. प्लस कपल इफेक्ट ऑफ FII सेलिंग, क्योंकि FIIs हैव बीन वेरी मेजर शेयर होल्डर इन द बैंकिंग सेक्टर, तो वहां पर भी थोड़ा सा प्रेशर बैंकिंग की तरफ नजर आता है. However, I feel the results are okayish for all the three major banks. No major surprises there except for deposit reduction in ICICI. That's about it. Yeah, thanks, Vineet. We'll come to you again. So, Mohit, any inputs on the results from your end? Yeah, I think Vineet covered it pretty much, but I'll say a three or four more points, which is of course about the results, but more importantly putting them into context, right? I've said this before, that banking, particularly the retail banks which are there and not covering the whole gamut of banking, including investment banking and everything else, so just focusing on these retail ones, it is a business, as somebody very wise said, it's a business of collection rather than lending, right? So by that, going by that line, what you have to understand is, more importantly, that you can't just have insane amount of growth. So if somebody is expecting a 30% growth or more than that, essentially what you're doing is lending to somebody who's not going to pay you back, right? Because at some point in time the quality just decreases. So that's one point. The second thing around this piece, that you have to think through is, as Vineet said, I mean, these are big giants that they have become now, right? Having said that, banking, just by the nature of it, is since it's a conservative game, these elephants can still dance. So it is not that they are going to be slow or anything else, but having a 15-20% year on year growth is anyways big. The third thing is, I mean, these are structurally and strategically a very important asset for India to achieve its ambitions, right? Credit growth. And so they become strategically so important that whatever they do, one, they'll be too big to fail. So if they do anything mischievous, that is not good for the entire thing. So expecting them to be growing at way above things is not right. But I think specifics on the results, pretty much Vineet has covered it. All the three banks, I mean, have grown around the similar number. Some things have gone up and down, but very comparable. The only thing which stands out is ICICI losing on the deposits piece, because that becomes the backbone on how you can essentially further penetrate the growth profitably. So other than that, no, I think Vineet covered it. Don't want to repeat it. Yeah, Mohit. So before coming to Deepak's question, Vineet, I have a quick question. Do you see demand deteriorating owing to the increased interest rate in last quarter? Do you see that? So I think on the demand side, the loan growth is not showing that. So point is, everyone in India has seen high interest rates of 10-12% in last 10-15 years back also.
So interest rates at 6, 7%, 8%, I don't think it's going to matter to India's demand, because ultimately we are in a growing economy where capital is always pricey. So I think we can still continue to grow even if interest rates increase maybe 2% from here. So I don't think it's going to change a ground level picture. Of course, US has a different rule and different economy. India is not that kind of economy where if interest rate drop from 6 to 8%, demand would dampen. I don't think so. Right, Vineet. If we talk about credit cycle, so where are we placed, if I ask you? I think we are starting up with the credit offtake, because पिछले 2 साल में इतना ज़्यादा credit dispersal नहीं हुआ था from the major banks. Things are normalizing. Most of the big chunky loans from the steel sector has already been paid off. Many companies have already deleveraged. I think credit cycle is starting slowly. First leg is from the retail side. Retail loan book is picking up very fast in the economy right now. Corporate it will be the second leg, which I think will start probably 2 quarters down the lane, 2-3 quarters. Yeah, right. So Deepak, you can unmute and ask your question, please. Okay, so thanks for giving me this opportunity. I have basically two things to check with you. First thing, I sense that its first thing is about Yes Bank. I know it's beaten down and not a very good stocks in invest. It destroyed investors well. I sense there some accumulation is going on in Yes Bank, and even the results, whatever as per my knowledge, it is getting improved every quarter, and management is looking serious to grow the bank. I just want to know the view on the Yes Bank here onwards. The second thing I'll ask in the same slot. The second thing I see that Adani is growing and doing lots of acquisitions on the cost of loans from the bank. Which bank is exposed to Adani Group on a higher side? If somebody can give me that sense based on their knowledge, these two things I have to check. That's all. Yeah, sure. So we can come to first Yes Bank. Request you to please mute yourself. Meanwhile, I'm speaking. So point is, people see Yes Bank as one of those banks which has been beaten down and can scale up the highs of its glory days. I don't see that. Why? Because number one, their equity is highly diluted now. So price is a function of two things. One is EPS and second is number of shares. So if number of shares are 10 times, I don't think you will see the same price. Yes Bank is still trading at 45,000 crore market cap. If its price goes maybe 3 times from here, it becomes a 1.2 to 1.5 lakh crore company, which is right now putting you in the leagues of big banks with higher credit rating, etc. So Yes Bank is planning to raise further equity of I think 10,000 crore, which will again dilute the shareholding by at least 20%. Those are some of the points which you have to keep in mind. Results only doesn't matter in Yes Bank because there is a lot of equity dilution happening. Even if they report good profitability, their EPS will not jump in that sense because the number of shares are very high, and hence the upside is also not very high there. People have to understand that. I think Fair point, Vineet. Thank you for that. The other one I had with the Adani groups. Yeah, so you have to go through the news. I tried to find the bank-wise exposure for Adani, but I couldn't find anywhere. A couple of websites also I've gone through. I think a majority of the debt for Adani Group is coming from PSU PAC. I'm not sure if any private bank is lending them. Maybe you can check the news. This is what is my opinion. Thanks a lot, Vineet. Thank you. Mohit, anything you have to add?
Yeah, not directly related to Yes Bank, but I think Vineet talked about the fact that a lot of the private banks have been under pressure more recently, let's say for last 6 months or so, because of the FII selling, right? What you got to understand is a bit of understanding of FII, right? Yes, the growth is important to them, but more important is capital preservation. And I'm talking of big funds, and more importantly, corporate governance, right? And that's what you get in in these banks, right? You can understand how top line is getting converted to bottom line, and it is not just a matter of 1 year, 2 year. They have been around, and the management is absolutely top notch. Along, and not just the management, there are risk checks and balances along the way, and it is not just driven by, like, let's say, one person, right? So if we are expecting the things to turn back to the FIs, guess where they are going to go, which is the things that they're most comfortable with, which is places where there is better corporate governance, and you can extend that even out to outside banking. So always, if you want to preserve your capital and make money in the longer term, watch out for corporate governance, because that is the most important thing. If you haven't learned the lesson, you will probably learn it, and if you have, do apply it. Yeah, Mohit. So next we have any other question, Deepak, or we are good? No. Thanks, Mohit. Point noted. Thanks, Deepak. So Sanju, you can go next. Yeah, thank you, Prince. So first, I would like to thank Vineet also for his fairly detailed, threads on Twitter on banks. Thank you, Vineet. They are quite helpful. I have two questions. When we are saying that ICICI Bank lost 14,000 crores, what percentage of total deposit is that? I think it's a blip. And second, if Yes Bank, I know majority of us are not quite, optimistic, but why would, Carlyle and Advent try to invest in that bank? So Sanju, I'll come to your first question first. I understand it's a blip. It's just 1.4% of the total book. But even if a reduction of 1 crore, I don't see it coming when all the industry is growing. Why would ICICI want to degrow their deposits? That's the main question. It's not about the quantum. It's about why to go for a degrowth in deposits. Either they have faltered somewhere, that their deposits, they have lost deposits because either they were not increased, the interest rates were not increased or time, or there is something which is not disclosed properly. I don't see any other bank. I have seen IndusInd, I have seen IDFC, HDFC, Kotak Mahindra, preliminary numbers of IDFC, preliminary numbers of Axis. No bank is saying that our deposits are growing, our deposits are coming down. Only ICI is the outlier. And I feel that being a shift to a more digitized bank, it should attract more deposits. Rather it is happening opposite. मतलब उल्टा ही हो रहा है, कहानी उल्टी चल रही है. मुझे नहीं समझ आया क्यों. So this is either just one blip, maybe one quarter blip, but let's see how things move. My ideal take is, if they want to grow their loan book faster, they need to have higher deposits. That was always my take. On Yes Bank, yes, I understand institutions have invested money. I completely understand. But point is, do you see upside? So we should never ride back on somebody else's investment. That should be the mantra always. चाहे वो राकेश झुंझुनवाला हो, चाहे वो ब्लैक रॉक हो, चाहे वो कार्लाइल हो, चाहे वो बार्बर पिंकस हो. I have worked in private equity firms also. I know how they operate, and I don't want to comment on it. But point is, are we riding on Carlyle's investment, or are we riding on our own thesis? That's the point which I want to make here. Carlyle can have other number of theses to invest. Is your thesis allowing you to invest? Is Carlyle a function in your thesis to invest? That's the question.
For me, Carlyle is not Carlyle is not a factor in my investing function, or nobody else's investment is thesis is a factor in my thesis. My thesis is always on the fundamentals, how fundamentals will move. No, thank you for that. It's as a disclosure, I am not invested. But all I wanted to know is what is their thesis? I mean, if they are pumping in billions of dollars or thinking of, what can be their thesis? So it's So not you about. also have to understand, not all decisions in the corporate world are linked to profitability. So if Carlyle wants to be in good books of the bank or good books of the government, when government was trying to salvage the situation, when SBI was investing in it, they could have become pally with the government by investing in Yes Bank with SBI. You have to understand the dynamics also. No, मतलब सिर्फ profitability नहीं होती, stake पे बहुत कुछ होता है. There are stakeholders management, there are government management, n number of things are there. सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी ना देखी जाए हर जगह पे उन लोगों की इन्वेस्टमेंट के लिए. उनका इन्वेस्टमेंट रेशनल क्या है ये हमें नहीं पता ना. Yeah, okay. Thanks, Vineet. Thanks a ton. Mohit, any input or shall we move on to next question? नहीं यार, definitely. I think I'll just emphasize and underscore what Vineet said, the last thing. I mean, all these headlines on somebody has invested looks great, but what you got to understand is what's their objective, which you'll never understand, right? Because nobody's going to come and tell you what their actual objective is. Plus, what percentage of their risk that they're taking on this, right? So, is it like 20%, like 0.1%? You don't know, right? So you absolutely got to do your homework on why you are doing it rather than somebody else, and that this just doesn't apply to this case, but could be much broader. And as I say, it's very human nature to say, oh, that big investor has is investing into this stock, but I mean that's just headline. Probably that's not going to make you money. Right, Mohit. So before coming to next question, I will request the audiences, if they have any relevant question, they can send in their request or they can simply comment it on this spaces so that we can take up those questions. And if you are liking the discussion, kindly follow our handle so that in future also you can get to connect with us when we host such sessions, and valuable inputs as Vineet and Mohit are adding value to today's spaces. Sanjeev, you are done with the question, right? Yeah, I'm done. Thank you, Prince. So to take more speakers, I'll be pulling few speakers down. So Rahul, you can unmute and ask your question, please. Thank you so much. I have only one question. Like, I have a huge holding of HDFC Bank, but I'm very worried about the stagflation and the repo tax. So, should I hold or just take my money out of the market because of the Rahul, stagflation and the repo tax? Rahul, what is stagflation? The combination of inflation and what say berozgari and inflation. Yeah, okay. I mean, I wouldn't say that has anything to do with HDFC or anything else. First of all, stagflation India में कहीं भी नहीं है यार. जो भी है सब कहानी है. Is what my understanding is. Somebody can correct me if I'm wrong. I've just very summarized it. What you got to understand is India is still one of the uh, growing economies, and on a risk reward basis, if somebody wants to put money, this is where he will from the funds which are outside of India, because there is a stable government. It is still growing. It is improving on policies. It has a massive younger population, not I would say totally young, but younger population who can speak English, everything, and I can go on and on. I mean, in terms of stagflation is basically that your inflation is running above your growth, right? I mean, India में वो नहीं है यार. I wouldn't think so. Now,
question about you taking your money out from HDFC and running away or doing something else, I mean, that's a decision you have to take. I cannot advise you on that decision. But on stagflation, I have told you what my view is. Again, And Vineet. what about the repo tax? Sorry, repo tax is what? RBI increased the repo tax. Oh, The repo repo rate. rate he is saying, Mohit. Okay, repo rate. यार Yeah, repo rate. so interest rates अगर increase होंगी तो repo तो अपने आप increase होगा ही. यार अभी अभी की अगर तुम interest rates देखोगे तो I mean it is the lowest in I don't know 4 5 6 years. So धीरे धीरे और interest rate increase होना एक अच्छी चीज़ है is what I think. अगर 2% में पहुंच जाएगी ना तो problem है is what I think for an economy like India. So it has to be around 7 8%. और उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ होती रहनी चाहिए. अगर तुम्हारी जीडीपी 8% से ग्रो कर रही है या 8 7 से 9 के बीच में whatever that number is it keeps moving, तुम्हारी इंटरेस्ट रेट शुड नॉट बी टू फार अवे फ्रॉम दैट, राइट? अदरवाइज things start moving in bad directions. So I think that's all fine. Bank RBI is doing the right things. Yeah, Vineet. Okay, thank you so much. Thank you so much for answering me. विनीत अगर कुछ है तो ऐड कर दो यार, मेरे से बेटर. राहुल, एक चीज आपको समझने की जरूरत है. रेपो इज नॉट ए टैक्स, इट इज ए मेजर ऑफ आरबीआई. आरबीआई के तरीके होते हैं मार्केट में लिक्विडिटी कम करने के. इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बॉन्ड बाइंग सेलिंग, ये सब तरीके होते हैं मार्केट से लिक्विडिटी निकालने के, ताकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना बढ़े. अगर मार्केट से इन्फ्लेशन लिक्विडिटी निकल जाती है, यानी पैसा मार्केट से सक कर लेता है आरबीआई, तो मार्केट के अंदर ग्रोथ का हेडरूम नहीं बचता. अगर जब ग्रोथ का हेडरूम नहीं बचता तो ग्रोथ डैम्पन होती है, उससे इन्फ्लेशन कम आती है. So that's the function of repo rate, reverse repo rate and the likes of bond buying, selling and open market operations. So उसको आप टैक्स ना समझे सबसे पहले तो. दूसरी बात, जब हर जगह पे टाइटनिंग हो रही है, यूएस में टाइटनिंग हो रही है and everybody is trying to tighten their economy due to inflation and all, in order to control inflation, हर बंदा, हर सेंट्रल बैंक यही चाहेगा कि भैया मैं लिक्विडिटी उठा लूं टेबल से जितनी हो सके, ताकि मैं इन्फ्लेशन को जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर सकूं. सो इट्स अ फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग योर इन्फ्लेशन. तो अगर आप कह रहे हैं कि रेपो टैक्स से मेरा एचडीएफसी पे फर्क पड़ जाएगा या ये पड़ जाएगा, तो वो सिर्फ एचडीएफसी के लिए नहीं है, पूरा इंडस्ट्री वाइड है. So you will have to consider it. It is a function for the industry. It is not specifically for the bank. तो या तो आप बिल्कुल बैंकिंग का ओवरव्यू लेके आप एचडीएफसी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अलग चीज है. बट पॉइंट इज इट इज नॉट ओनली फॉर एचडीएफसी. Vineet, although maximum जो हमारे audiences हैं, they must be aware, but एक quantitative easing और quantitative tightening वगैरह का एक बार थोड़ा और सरल भाषा में बताओ यार. काफी लोगों का बाद में मैसेज आता है कि we don't understand, so that would be really helpful for them. मोहित, you want to take it? क्वेश्चन वापस पूछना प्लीज. क्वेश्चन मोहित यही है कि क्यूई क्यूटी का थोड़ा बहुत मतलब लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का बेसिकली ऑडियंसेस के लिए, सो दैट दे गेट टू नो कि एम आई ऑडिबल विनीत, मोहित? हाँ बिल्कुल ऑडिबल हो. So Mohit, do you want to take this, because I believe you can explain it better than me. I'll try that. I'll try और add कर देना विनीत और correct me wherever I go wrong. So basically see, बहुत आसान है. So quantitative शब्द is something to do with the numbers, okay? Tightening and easing is all. Tightening मतलब money supply को कम करना, और easing means money supply को increase करना, okay? So with that nuance we'll progress, okay? So numbers is let's say money, and उसको increase or decrease करना. Now with Reserve Bank they have different instruments. अब उसमें दो broad instruments ले लो. So one is buying the securities from the market, okay? Mortgage backed securities जो कि banks के पास पड़ी रहती हैं. And second is interest rates. Now जैसे ही आप interest rate कम करते हो, right?
When you so quantitative easing is basically you try and bring the interest rate down. When you're bringing the interest rate down, what that means is credit becomes easier for somebody to avail because he has to pay less interest on it, right? And also by buying the liabilities from the market, you're putting more money into the market. For example, अगर किसी बैंक के पास I don't know $10 billion की liabilities पड़ी हैं and they are sitting on it and they don't have the cash, what central bank does is they say, give me those liabilities and I'm going to pay you the cash, which you can use to further proliferate into the system, right? Because central bank uses these banks as the way to proliferate the system. So ये quantitative easing हो गई. Tightening is nothing but doing opposite of easing, which is I keep increasing the interest rate and I start putting those liabilities back into the market, which is onto the banks, so that I get the money back from the system, right? And this is exactly it. And when there is too much liquidity into the market, asset gets repriced. And asset repricing ऐसे होती है कि जो तुम्हारी cost of capital है that comes down, which means जो तुम्हारे financial models हैं उसमें जो risk free rate होती है उसको कम कर दोगे, so all the asset prices go up, which is what we exactly saw in the last 1 year. जब quantitative easing थी, tightening में सब कुछ ऊपर जा रहा है तो asset prices अपने आप नीचे आ जाएंगे. बहुत simple शब्दों में ये है, but I mean there are way more complexities and people there are like PhD and multi-PhD economists around it, but in a very simple term this is what it is. और सिंपल शब्दों में समझना है तो आसान बात यह है कि मार्केट में पैसा छोड़ना यानी कि लिक्विडिटी इंक्रीज करना इज क्वांटिटेटिव ईजिंग, और मार्केट से लिक्विडिटी उठाना यानी पैसे उठाना किसी सेंट्रल बैंक को इज क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। मार्केट में पैसे छोड़े कैसे जाते हैं? इंटरेस्ट रेट कम करके या बॉन्ड बाइंग करके, यानी कि आरबीआई जो है बॉन्ड बाय कर लेगा और लोगों को पैसा दे देगा या बैंकों को पैसा दे देगा, उससे पैसा ज्यादा हो जाता है लोगों का और मार्केट में भी पैसा ज्यादा आ जाता है। उसका अपोजिट करके यानी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करके और बॉन्ड सेलिंग करके दे कैन टेक द मनी ऑफ द टेबल। Right, Vineet. So, Vijay, you can go next, and Ayan, as and when you feel comfortable, you can chip in here. We would also love to know your view. Yeah, Vijay. Yeah, good evening, everyone. Good evening, Prince sir. Good evening, Vineet ji, Mohit ji. So, if you're comfortable, can you tell me that how will this ICICI Bank and Kotak Bank will react to its results on Monday? Or Joe and anyone who is super reacting like 50% YOY growth. तो YOY growth तो I would say कि it's not even efficient. इसको YOY compare करना. Last quarter, last year, this quarter was a peak COVID. तो उसको आप इससे कहाँ compare कर रहे हो? And quarter on quarter you see HDFC Bank was bad, Kotak was bad, and ICICI Bank is okay. तो उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है. YOY अब सारी हेडलाइंस 50% YOY ग्रोथ आ गई तो इट डजंट मेक एनी सेंस. और रही बात उसकी तो बजाज फाइनेंस ने सुपर रिजल्ट्स दिए थे अपने Q4 के, मतलब बेस्ट एवर रिजल्ट्स थे. देन आल्सो इट क्रैश 7% द वेरी नेक्स्ट डे. तो इफ यू आर कंफर्टेबल कैन यू टेल मी दैट हाउ विल द शेयर प्राइसेस रिएक्ट. एंड रही बात आईसीआईसी की तो इट रैलीड ऑलमोस्ट 20% इन लास्ट 1 month. तो आई गेस वो फैक्टर इन हो चुके कि यहाँ रिजल्ट्स अच्छे आएंगे. तो अब मतलब अब और कितना होगे? इट कैन नॉट गो टू 80H. तो एंड थैंक यू. कालराज जी, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं. मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में ही यही बात बोली थी. आई थिंक यू मस्ट नॉट हैव जॉइंड दैट टाइम. मैंने यही बोला था कि YOY देखना सबसे गलत चीज है आज के टाइम पे इन बैंकिंग स्पेस एटलीस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट बहुत अलग था और पिछली बार जून में सेकेंड वेव पीक पे थी, तो बेस ही बहुत कम है. तो क्यों देखना है YOY? और बैंकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक्रीटिव होता है, यानी आपकी इंटरेस्ट इनकम आपने बना ली जो लोन बुक पे, उसके ऊपर बनती है और इंटरेस्ट इनकम व्हेन यू इंक्रीज योर लोन बुक. तो इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखना ज्यादा जरूरी होता है बैंक के अंदर. YOY इंडस्ट्री ने टेम्पलेट बना रखा है, न्यूज़पेपर वालों ने भी और टीवी वालों ने भी, सब लोग YOY देख के नंबर छापते हैं.
it should not impact the decisioning. We should look all the banking results at least on a quarterly basis. Second thing, on the pricing, I am not an expert in pricing, to be very true. सही बताऊं तो इट्स अ नॉन इवेंट फॉर मी. मुझे नहीं लगता कि इट शुड इम्पैक्ट द प्राइसेस टू मच. एवरीथिंग शुड हैव ऑलरेडी बीन फैक्टर्ड इन. पिछले क्वार्टर जो आप बजाज फाइनेंस के नंबर्स की बात कर रहे हैं, उसके पिछले 2 क्वार्टर में बजाज फाइनेंस ने 50% का जंप दिखाया था प्रॉफिट में, और पिछले क्वार्टर बजाज फाइनेंस का जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 18% से ग्रो करा था. दैट वाज अ डैम्पनर फॉर बजाज फाइनेंस. इसीलिए बजाज फाइनेंस ने रिएक्ट ऐसे किया था. इस बार आई डोंट थिंक इट्स गोना बी द सेम स्टोरी. बजाज फाइनेंस शुड पोस्ट गुड नंबर्स दिस टाइम अराउंड. But let's see. I don't think the numbers are either bullish or bearish. They are practically, if somebody is tracking the industry properly, सबको पता है कि M2M के losses आने थे इस क्वार्टर में, और वो आए भी हैं. HDFC में भी आए हैं और कोटक में भी आए हैं. ICICI has somehow managed it through higher other incomes, but ICICI ने भी रिपोर्ट किया है कि उनके भी losses हुए हैं M2M में. तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्राइस में अप डाउन होना चाहिए. एवरीथिंग शुड बी प्राइस्ड इन. Vineet, we have a similar question on like एक बंदा M2M losses के बारे में थोड़ा बोल रहा है कि if you guys can explain. So किसी भी बैंक में जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी बैंक को बड़ा लोन देना है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करके कैश बनाते हैं और दे देते हैं. सो सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट में भी 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती हैं, बट बैंक्स आर ओनली अलाउड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स. सो उसमें इन्वेस्टमेंट में भी 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती हैं. अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट, held till maturity investment and held for trading investment. तो जो held till maturity investment होती है, बैंक उन bonds को या treasury securities को maturity तक रखता है और अपने investment portfolio का 25% तक वो held till maturity रख सकता है as per RBI guideline. उस held till maturity पे उसे कोई M2M लेने की जरूरत नहीं होती. लेकिन जो अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज होती हैं या फिर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज होती हैं, जो वो इजीली लिक्विडेट करके अपने लोन डिसबर्स करते हैं, उन सब सिक्योरिटीज पे उन्हें M2M मार्क टू मार्केट हर बार करना ही पड़ता है जब भी मार्केट में प्राइस मूवमेंट होती है. अब हम प्राइस मूवमेंट पे आ जाते हैं कि उन सिक्योरिटीज का प्राइस मूव कैसे होता है. कोई भी बॉन्ड या ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी सिक्योरिटीज जो होती हैं वो बॉन्ड टाइप की होती हैं, और जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड का प्राइस हमेशा घटता है. क्यों? क्योंकि अगर आपने 6% का बॉन्ड लिया हुआ है और मार्केट में रेट चल रहा है 7% का, तो उस बॉन्ड का प्राइस जो है कम हो जाएगा टू रिफ्लेक्ट कि अगर आज कोई बंदा उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा तो उसे 7% की यील्ड मिले. तो वो मार्केट का फैक्टर इन करता है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज. तो इस हिसाब से अगर आपके बॉन्ड का प्राइस कम हो गया इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से, तो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको नोशनल लॉस हो गया, विच इज M2M लॉस. तो एवरी बैंक हैज टू मेंटेन सम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सो दैट दे हैव सम कैश अवेलेबल in case of disbursement of the money and all. So when that cash is available, they disburse the money. If they are not disbursing, that portfolio still remain on the books. जैसे ही मूवमेंट आती है M2M हो जाता है. मूवमेंट क्यों आती है? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज या यील्ड कर्व इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से आती है. So that's the prime funda on M2M losses, how it happens. Thanks, Vineet. So Ayan, you have anything about you can if you have any. Prince, your voice is breaking. Prince, आवाज चली गई यार. Look better now. अब better है. One thing I wanted to add on when somebody asked about Monday को price का क्या होगा and all of that, right? यार पहली दो तीन चीजें हैं इसमें. So पहली बात, I don't think so anybody can tell you what the Monday price is with surety.
with some probability they can. And if they are telling 100% sure, then do they have the skin in the game? Now, second piece is the results that come out now. You have to also understand India is a market that is growing in maturity, as in the stock market, right? It is not a fully mature market, right? So the things will change as we go, and the results that come out is essentially you compare it to quarter on quarter, or you compare it to year on year, and if the growth is, I don't know, 20-30%, you say the results are fantastic. Or if the growth is below 4, 5, 10%, you say the results are muted, right? Whether that's on the top line or bottom line. However, what none of the analysts say, because there is not a very strong analyst community, it is there but it is not in cohesion. What they don't tell you is what is the consensus estimates. And that is one thing I massively miss in the Indian markets, because consensus estimates essentially tell you what is already baked in into the price, right? That is because if 50% growth is baked into the price, then only if you're going to report above 50% is when it is positive, right? But if you're reporting 30% on a year on year basis and somebody thinks it's good numbers, but the growth that has been baked already into the stock price is 50, that's not a great result. That's why what you see in US is there is a there is a consensus that is there. So you don't look at what was last quarter. I mean, when I say don't look at, you look at what there was last quarter. However, most important is what are the consensus estimates on the top line, bottom line, subscriber numbers, or whatever the key metrics are for everything. So this is one thing that I would love to see in the Indian markets over the period of time, as and when it comes. And that will really, really help people get more transparent, 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 get more transparent,